अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1919 के दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, दैट इज़ रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और अमृतसर मैसेकर। दीज टू इवेंट्स आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ईच अदर और एक दूसरे की रीज़न किस तरह से हैं, इनके होने की क्या वजूहात हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स in this video. So before starting the video, I just request you all, please like and subscribe the channel ताकि हम एक दूसरे के साथ connected रहें. Let's start with the very first topic, Rowlatt Act. During the First World War, the British were extremely unhappy with the Hindu-Muslim unity. They wanted to keep an eye on their activities, and for that purpose, they passed the most controversial legislative bill, Rowlatt Act. The purpose of this bill was to curb the revolutionary activities and to curtail the civil liberties of Indians. The Legislative Committee under Justice Sidney Rowlatt drafted this black law. Why is it known as black law? We are discussing this point as well. This act was an extension of the emergency law Defense of India Act 1915. During the war, जब ब्रिटिश को इस बात का खतरा था that Indians would now pressurize them or would bring something unusual in India, so they implemented a law which is known as Defense of India Act 1915. According to that act, they were keeping an eye on the revolutionary activities or political unrest in the state. अब ये जो लॉ न्यू पास हुआ, रॉलेट एक्ट, दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस लॉ. उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, इम्प्लीमेंटेशंस क्या थी या उसकी प्रोविजंस क्या थी, लेट्स डिस्कस देम. According to this act, they gave boundless power to the police and administration. Police was allowed to arrest any suspect without a warrant. अगर पुलिस को कोई भी ऐसा आदमी नज़र आए जिसको देख के या जिसकी एक्टिविटी से ये अंदाज़ा हो कि ये कुछ गलत कर रहा है, या जस्ट डाउट की बिना पे उसको अरेस्ट किया जा सकता था. और ना सिर्फ ये कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, बल्कि विदाउट वारंट लोगों के घरों की तलाशी भी ली जा रही थी. मीन्स दे डिड नॉट हैव सर्च वारंट, दे डिड नॉट हैव अरेस्ट वारंट, बट they were searching the families, the houses, and they were arresting the suspects as well. Secondly, the detention was for the suspect up to 2 years without a trial. So ये बहुत बड़ा इसीलिए इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया कि आपका लॉ ये किस किस्म का लॉ है कि आप बेल नहीं करवा सकते, आपको विदाउट ट्रायल जो है 2 साल के लिए जेल में रखा जा रहा है. So these points were making this act a black law. Next point is that they banned all public gatherings, whether they were cultural or religious. किसी किस्म का कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं होगा, कोई कल्चरल गैदरिंग नहीं होगी. 4 से ज़्यादा लोग अगर कहीं खड़े पाए गए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है. सो कंप्लीट बैन था पब्लिक गैदरिंग पे. And the last point was speedy trial courts were held जो 3 हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल थी, और ये लोग और ये जो जजेस थे या ये जो कोर्ट्स थी वो इन सस्पेक्ट्स की स्पीडी ट्रायल्स करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट विल सी द इम्पैक्ट्स ऑफ रॉलेट एक्ट. All the 23 non-official members in the Imperial Legislative Council voted against the bill. Even the members who were loyal to the British government, they were against this law. They were not favoring it and they were demanding कि इस law को implement ना किया जाए. Mahatma Gandhi launched a nationwide satyagraha movement, which was a civil disobedience movement, or you can say it was a non-cooperation movement, but it was launched peacefully. Even then, the bill was passed and decreed as Rowlatt Act.
Muhammad Ali Jinnah resigned from the Imperial Legislative Council as a protest. और मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा भी there were many other leaders who resigned from their legislative post, लेकिन उनके रेजिग्नेशन से, उनके प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क नहीं आया और ये बिल इम्प्लीमेंट हो के रहा. This bill later became the reason of Amritsar Massacre. अब अमृतसर मैसेकर क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये 4 पर्सनालिटीज़ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं. द फर्स्ट वन इज़ महात्मा गांधी. एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, जो कि एक नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. सो गांधी की इस मूवमेंट के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे इंडिया में डिफरेंट एरियाज़ में. Especially Punjab became the main area जहाँ political unrest बहुत ज़्यादा था. Dr. Saifuddin and Dr. Satyapal were arrested as they were leading the protest. हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में भी. नेक्स्ट है हमारे पास जनरल डायर. ही वॉज द मैन who is known as the butcher of Amritsar. मीन्स के ये जितना भी ट्रैजिक इवेंट या इंसिडेंट क्रिएट हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. ही वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड इट. सो लेट्स डिस्कस द इवेंट इन डिटेल. और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वॉज अ कश्मीरी मुस्लिम बैरिस्टर and Dr. Satyapal was a Cambridge educated medical practitioner. These two leaders were leading the protest at Amritsar. The British arrested them, or at first their arrest was a secret. ब्रिटिश को ये लगता था कि सीक्रेटली इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और किसी को ख़बर भी नहीं होगी. बट द न्यूज़ स्प्रेड like a fire in the jungle. Everybody knew about that. And right after the arrest of these two leaders, Amritsar became a hub of protests. People began assembling in thousands और गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह पे लोग जो है वो प्रोटेस्ट के लिए निकल आए थे. British Army fired at the unarmed crowd and their fire or firing further provoked the crowd, setting off a series of violent events. इस टाइम पे जनरल डायर को अपॉइंट किया गया टू मेंटेन पीस इन द स्टेट. जनरल डायर ने जो प्रिकॉशंस ली उनमें एक ये थी कि ही डिप्लॉयड एयरप्लेन्स टू सर्वे गैदरिंग्स. मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया गया ऑन 11 अप्रैल को, और अकॉर्डिंग टू दिस मार्शल लॉ अगेन कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, लोगों को किसी भी फेस्टिवल को अटेंड करने की इजाज़त नहीं थी. Let's discuss the event in detail. On 13th April 1919, 20,000 people gathered in Jallianwala Bagh. अब इन 20,000 people के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव थे या डिफरेंट पर्पस था इस बाग में गैदर होने का. Few of them were gathered to celebrate बैसाखी फेस्टिवल, बिकॉज इस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मार्शल लॉ का पता नहीं था या जो पब्लिक गैदरिंग पे बैन था, दे वर अनअवेयर अबाउट दैट. बहुत सी औरतें, बच्चे, मर्द, वो सब के सब बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इस बाग में या इस ग्राउंड में गैदर हुए थे. सेकेंडली, बहुत से लोग ऐसे थे who were there for a peaceful protest against the Rowlatt Act, and most of them were there against the unfair arrest of Congress leaders that were Dr. Satyapal and the other Dr. Saifuddin. Suddenly, General Dyer ordered his soldiers to block all exits and shoot at the crowd without warning them. Here I want to show you the image of Jallianwala Bagh, जहाँ ये सारी की सारी ट्रेजेडी हुई. You can see this garden or this bagh had only one entrance and exit. Mean एक ही रास्ता था अंदर आने का और इस बाग से बाहर जाने का. The walls were 10 feet high, so it was not possible for a common person कि वो दीवारें कूद के अपनी जान बचा सकता. So this was the time when General Dyer ordered his army कि वो एंट्रेंस को या एग्जिट वे को ब्लॉक करें
और फिर इन अनआर्म्ड लोगों पे फायर खोल दें। पीपल वर हेल्पलेस, दे हैड नो वे टू गो। बच्चे थे, औरतें थीं, मर्द थे, हर एज ग्रुप का इंसान या हर एज ग्रुप का फ़र्द यहाँ पे मौजूद था, एंड दे हैड नो अदर वे टू मूव ऑन। About thousands were killed, 1600 were injured. This terrible event caused a big rift between Indians and the British government. Despite widespread anger, no action was taken against General Dyer. The incident made many moderate leaders lose trust in the British rule. A commission was later formed to investigate, and while it criticized General Dyer's action, no strong punishment was given. सिर्फ और सिर्फ उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, उसके अलावा कोई मेन एक्शन नहीं लिया गया इतने सारे लोगों की मौत का। ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको समझ भी आ गई होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारे पास आपका फीडबैक मौजूद रहे और हमें पता रहे कि हमने फर्दर वीडियोस किन किन टॉपिक्स पे बनानी हैं। वंस अगेन सेम रिक्वेस्ट, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट, लीव योर कमेंट्स और हमारे चैनल को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।